We extend a very warm welcome to all our brothers and sisters on Sunday evening, 7 minutes past 5 p.m. Due to technical difficulties, we are a little late, for which I sincerely apologize personally. Although so much I wish that I should start in time, but sometimes things are beyond you. Balkrishanji, Om Namah Shivaya, thank you very much. And let's start today's program. If you watch today's program carefully, if you get the central theme and a central idea, you can be a startup, you can be an entrepreneur, you can be service exporter, or you can help in services export promotion. Whatever you wish to do, you can take on today in this journey. So ladies and gentlemen, let's move on. Making education relevant, micro, small and medium enterprise service industry India, Sunday, 19 September 2021. And service industry, startups, entrepreneurs, self-employment. Under the dynamic and dedicated leadership of this segment, Shri Ravindranath Ji, who is the chairman of our MSME. He was little unwell, but now God had been very kind. He's recovering very well. And hopefully, I pray that from next Sunday, he should be the one who should be taking on the session, because he brought very, very meaningful sessions in the past. But in between, he was little unwell and God had been extra kind. Now he's all right. Everything is fine. So ladies and gentlemen, we are going to talk about today the micro, small and the medium enterprise business, solutions, training, profitability, and how to be successful. All the aspects. Listen very carefully, watch very carefully, participate actively. I will try and see if we can give some prizes in between to some of the winners. That depends on what is your post, what kind of a post you are sending across to us. And I wish to get a central understanding from your point of view. Are we in sync with me, whatever I'm sharing with you? So let's roll on and let's move on. Micro, small, medium enterprise, service industry, and of course the case study and the entire process we are going to discuss in context of India. We extend a very warm welcome to Balkrishanji, Habung ma'am, Vimalji, and Viraj, Devanganji, Sakshiji, and others who would be joining, who are in the process of joining. We extend a very warm welcome to all of you. As you all are aware that our chamber basically is in India and the non-resident Indian diaspora. Since 1994, we touch with them. We have been organizing interface, collaboration, meeting, eating, greeting, whatever you want to talk. 25th of March 2020, complete lockdown. We focused on making education relevant, because doctors, nurses, paramedical people, they all were doing great job. So we took on the journey. Why not we should take care of the education segments? I'm also grateful to Sakshiji and Kavita Mahant from Chhattisgarh. She's always very keen to promote tourism, film-induced tourism over there. I'm also grateful to Amanji. He's my mentor also. He's my teacher also. And I keep learning a lot of things from him. We all learn from our youngsters. Okay, let's move on, ladies and gentlemen. Listen, today every slide is very important. When we talk about the global MSME, micro, small and medium enterprise, in a very humble way, what I have learned from the former CMD of the NSIC and present chairman of ICSI, International Chamber for Service Industry, Ravindranath Ji, that education and skills are incomplete unless we give the right employment or entrepreneurship to every child. I totally agree. I'm in sync with him. And that's why he always uses a word, Shiksha, Kaushalta, and Udmita. Yes, I agree, sir. And I follow your footsteps. What you're saying is correct. Now, excuse me. Formal and informal, micro, small, and medium enterprise, when we talk about world over, 90% of all the firms on the average, they are the part of MSME. 70%, more than 2/3 of the global population employed by MSME, they contribute towards 50% of the global GDP. In emerging market,
in emerging markets, most formal jobs are generated by SMEs, that is small micro enterprise, which creates 7 out of 10 jobs today. Let's move on quickly. Micro, small and medium enterprise, that would depend upon the size. What is your operation, especially how much is the plant, machinery, equipment, how much money you have spent on that, what is your annual turnover, how you are moving ahead. All these things I have picked up from Amanji. I was never interested about finance, but he taught me a lot of things. Now, when we talk about especially those led by the women, youth, ethnic minorities, migrants, they suffered the most during this particular pandemic. International Trade Center survey of the COVID-19 impact among business in 136 countries, they have shown nearly 62% of the women-led small businesses have been strongly and deeply impacted and affected by the crisis of coronavirus. Let's move to India. From the global shore, I'm getting to India. All of us, we should be knowing there is one ministry called Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Very, very dynamic joint secretary at that point of time, joining hands with the CEO of Niti Aayog and the entire think tank together, all of them. And out of the entire 54 areas of services sector, they basically identified 12 sectors which Government of India, they wanted that they should focus on these areas. So let's empower the entire ecosystem of these 12 sectors through education, through skilling, through competencies, through capabilities, and complete focus on entrepreneurship by creating the services sector ecosystem in India, because otherwise everything focused on manufacturing, nobody's taking care of services. Now over here, when we talk about and when we think about, there are certain steps which are taken by Department of Commerce, and this was led by the Honorable Joint Secretary, I still recall, and their efforts was trade agreements, champion services sector initiative, support and trade promotion. And under the trade agreements, multilateral, plurilateral, bilateral, and commercially meaningful market access to be negotiated. In champion sector of service sector, you should just understand they identified 12 sectors. Support, services, export, promotion from various schemes which are available in India. Trade promotion, participate in all international trade fair exhibitions which are important. And reverse buyer sellers meet. That means the global exhibition in services, Advantage Healthcare India, higher education, wellness now, and a couple of other areas which we have to take into consideration. The champion sector, there was a logo also, it was something fantastic. And these 12 champion sectors with the various different ministries, you can well imagine what a beautiful scenario, all the 12 sectors of services. What was the objective? Now, when you talk about this particular objective of these 12 champion sectors, what exactly to be done? When you take into consideration domestic regulatory reform, skill development, services standard regime, value addition in domestic services, enhancing the export of services, visa regime, and new initiatives like the 5 pillars they took on, and sectoral schemes, action plan, and champion sectors of these services to be led. 5 pillars, which are the 5 pillars? New processes, new infrastructure, new sectors, new mindset, and new standards. It was fantastic to learn and to know. From Ministry of Commerce and Industry, after these 12 sectors were identified, we moved on to micro, small, and medium enterprise. When we moved in over here, we extend a very warm welcome. Let me extend a warm welcome to many others, those who have joined. Right. Now over here, Mamta Chauhanji, hearty welcome to you from Pauri Garhwal. अपने साथ आप गढ़वाल से और भी बहुत सारे लोगों को लाते हैं. समीक्षा रावल, हार्टी वेलकम टू यू. विमल चौहान जी, आपकी फेंसिंग कैसे चल रही है? आप बड़ा अच्छा करते हैं. दिलशान वफा जी, पठानकोट में सब कुछ संभाल के रखिएगा, बिकॉज पंजाब इज वेरी फ्रेजाइल एंड जस्ट नेक्स्ट टू द बॉर्डर, एंड वी वांट देयर शुड बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर वंडरफुल पंजाब. Mr. Ricky, I hope you are enjoying in Pasighat in Arunachal Pradesh. Keep enjoying over there. Something fantastic. Sakshi,
Never bend your head, always hold it high. Look the world straight in the eye. Yes. And look at MSME also, Sakshi now. We all will see towards MSME. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हम चले गए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में 12 चैंपियन सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हो गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर और वहां से हम मूव करें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज and when they were talking about सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर micro small and medium enterprise they have always played very important role in India's economy. Not only do these 6.3 crore MSMEs in India contribute 1/3 of the GDP of the country, but they also provide huge employment in the large spectrum of the society. We are grateful, and we are grateful to Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister. We will talk in a little while. Meanwhile, let me extend a very warm welcome. आप लिख रही हैं, behind every small business, there's a story worth knowing. All the corner shops in our towns and cities, the restaurants, cleaners, gyms, hair salons, hardware stores, these didn't come out of nowhere. Wow. Thank you. ममता जी कहते हैं कि पोस्ट भी कुछ ऐसा करो. So like a father, I send you my blessings. You have written such a beautiful quote. You get 500 rupees from our chamber this evening. 1500 रुपए आपके पहले हैं, आपके अकाउंट में 500 रुपए और जमा होते हैं. अब आप 2000 रुपए की हकदार हैं. आगे के क्वेश्चन हम आते रहेंगे. जैसे ममता ने पोस्ट किया, इस तरीके की चीज को पोस्ट कीजिए, इस तरीके की चीज लिखिए. Behind every small business, there's a story worth knowing. All the corner shops in our towns and cities, the restaurants, the cleaners, the gyms, the hair salons, the hardware stores, these didn't come out of the blue, or you say, where from have they come? No, 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 no. You got to know where from have they come. So that is something we all have to understand. We have to get into details. So that is something. Let's move on because I'm getting a lot of queries from overseas. Yes, they are praising Mamta's efforts. God bless all of you. Amisha ji, hearty welcome to you and pleasure to have you with us. Let's move on, ladies and gentlemen. अब MSME को भारत के सिनेरियो में देखते हैं. जो MSME sector है, it contributes almost 45% of India's total industrial employment, 50% of India's total exports, and 95% of all industrial units of the country, and more than 6,000 types of products which are manufactured in these industries as per the micro, small, and medium enterprise official website. When these industries grow, the economy of the country, and when the economy grows as a whole, the country flourishes and there's economic multiplier. These industries are also known as scale industries earlier, and now it is micro, small, and medium enterprise. इसके अलग-अलग segments हैं when we talk about it, so we will talk in a little while. I recall, मेरे को आज भी याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में निर्माण भवन के 7वें फ्लोर पे भी, जहां पर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और उनकी पूरी टीम, उनके साथ श्रीवास्तव जी, उनके साथ शेरखांडे जी और बाकी सब लोग वहां पर, और उसी तरीके से इधर उद्योग भवन में अरुण पांडा जी, और we made a presentation together. I still recall I had gone with, first presentation was with Mr. Vikram Kalsi, who is developing the Brain Pandits, a great visionary, a great soul, and a great person who is doing a great job. I always hold Mr. Vikram Kalsi into great big high pedestals because he's a very innovative and a creative child. So Dr. Arun Kumar Panda ji and Ram Mohan Mishra ji, my great salutations to both of you. आपने 3 साल वो कॉरिडोर सारे दिखा दिए, सारे डिपार्टमेंट दिखा दिए, सारी प्रेजेंटेशंस आपने ले ली, जो कुछ भी हमारे पास था, and I'm so grateful कि आप लोगों के प्रयास से it was Dr. Arun Kumar Panda and Ram Mohan Mishra ji, इनके साथ साथ कलराज मिश्रा जी,
एंड गिरिराज जी शुरू में, ये दोनों मंत्री महोदय, और उसके बाद फिर गडकरी जी आ गए, सारंगी जी आ गए, इनकी पूरी टीम आ गई, और हम सर्विसेज सेक्टर के बारे में बार बार अपने स्ट्रेटजी पेपर इन लोगों को देते रहे, बताते रहे, कहते रहे कि सर्विसेज सेक्टर को साथ लेकर आइए, एमएसएमई में जोड़िए, बच्चों के पास रोजगार कहां से आएगा, उनको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर चलिए। सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर, आईटी और आईटीएस का तो हर जगह जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, ऑल दैट वी टुक ऑन। सो नाउ when you talk about the MSME, micro, small and medium enterprise, we are listing out for your ready-made information. This program is going live on the YouTube. ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप 100 किताबें पढ़ेंगे और 100 वेबसाइट्स देखेंगे, तब जाके आपको, क्योंकि किसी एक जगह पर पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज द ट्रेजेडी, एंड दैट इज समथिंग विच इज नीडेड। परेशानी क्यों होती है, हम एक ऐसा पोर्टल क्यों नहीं बनाते जहां पर सब कुछ A to Z हो? आएगा वो भी समा. It is all becoming transparent and accountable. Things are coming. So list of MSME businesses when we talk about today, it's very important. Yes, MSME के बिजनेस के अंदर के एरियाज हैं, मैं इनकी गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट में जाकर भी आप उसको कर सकते हैं। 25 मार्च 2020 कंप्लीट लॉकडाउन, कोविड-19 एंड ऐलाने जंग कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि जीवन है तो कल है, कल भी तभी है जब जल है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो 25 मार्च 2020 कंप्लीट लॉकडाउन, कोविड-19, और उसके बाद एक नया इतिहास व्हाइट पन्ने की तरह जिंदगी दोबारा से शुरू होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, हम सभी को दोबारा से पुनः सब कुछ खड़ा इसको करना होगा देश को, और सेल्फ रिलायंट होना होगा, ताकि हम किसी पर आश्रित ना रहे बाहर, और सब कुछ हमारे पास यहीं पर हो। Every life a legacy, every small business a school. Thank you, Sakshi, enthusiasm आपका, बालकृष्ण जी, wonderful knowledge, Amisha, innovative session, thank you, knowledgeable session, great. I also learn and I pick up a lot of knowledge from all of you. अब आते हैं यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 पिलर्स हों, सेल्फ रिलायंट, इंडिया इज थिंकिंग, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज मूविंग, इंडिया इज बिकमिंग, and I am so grateful to Honorable Finance Minister that with the consent of the Honorable Prime Minister of India, 13th of May 2020 is a historic day. हम अपनी सारी तकलीफ भूल गए, सारे रोड मैप भूल गए, सारे एक्शन प्लान भूल गए, सारी स्ट्रेटजीज भूल गए, हम सब कुछ भूल गए कि कितनी बार हम कॉरिडोर्स में गए, हम सब कुछ भूल गए, क्योंकि we were so very happy that the Honorable Finance Minister on 13th of May 2020 she announced that from today onward in India, services sector will be at par with manufacturing sector. God bless you, ma'am. Thank you very much. उसके बाद revised MSME आ गया. That means अब आपकी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन है, उसमें ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग है और आपका सर्विसेज सेक्टर अलग है, दोनों को साथ लेकर इकट्ठे चल के the complete process being done over there, and that is the way we work on. अभी यहाँ पर उन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की जो डेफिनेशन दी, उसमें उन्होंने कहा कि आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कोई प्लांट लगाते हैं, कोई मशीनरी लगाते हैं, कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, और जो आप काम धंधा करते हैं उसका एनुअल टर्नओवर क्या होगा, उसके ऊपर रेशियो आपकी होगी कि आप माइक्रो में आते हैं, कि आप स्मॉल में आते हैं, कि आप मीडियम में आते हैं। विमल जी कह रहे हैं मेरे को तो इस समय ये बताओ कि सरकार से पैसे कहां से मिल सकते हैं, मैं एक फेंसिंग का इंस्टीट्यूट बनाऊं। मैं आपके साथ हूं विमल जी। कविता जी बहुत कुछ लिख रही हैं, छत्तीसगढ़ से कह रही हैं MSME does not give you platform to open your business, but also lots of benefits like exemption of taxes, and most importantly, personal growth. You become the best in what you do, making India Atmanirbhar Bharat. Great. That is something fantastic.
what we are looking forward to. तो ममता जी ये स्टेटमेंट ढूंढ के लेके आने में, और ममता जी हम कविता को भी 500 रुपए दे दें क्या? ठीक है कविता जी, आप अपने अकाउंट में भी 500 रुपए डाल लीजिए। अब पहले दो प्राइज आज चले गए, एक ममता जी को 500 रुपए का और एक कविता जी को। और कविता जी आपको सबका अकाउंट रखना है, क्योंकि आप ही को आगे बताना है चित्रा मैम को कि किसको क्या देना है, कैसे है, किस तरीके से है। आइए, सर्विसेज विद टेक्नोलॉजी इन डिमांड ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड। एजुकेशन, एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, रिमोट, फ्लिप, आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड लर्निंग। सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग में 3D आ गया, ऑटोमेशन, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई, और उसी के साथ साथ रिटेल में एकदम बदलाव आ गया, ई कॉमर्स आ गया, फाइनेंस में आपकी बैंकिंग की सर्विसेज ज्यादा डिजिटल हो गई। That is something which we have to really be thankful. साक्षी लिख रही है, whether you think you can or you think you can't, you are right. Thank you. हाबुंग मैम लिख रही है, excellent session. Thank you. बालकृष्ण जी लिख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, वेरी गुड। ममता चौहान, थैंक यू। जो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं अपने व्यूज पोस्ट कीजिए। फाइनेंस सेक्टर, फिर उसके बाद आया सिक्योरिटी, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रही है, तो उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिक्योरिटी में भी ध्यान देना होगा। तो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी है, दैट इज आल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट सेक्टर पूरा बदल गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, सब कुछ आ गया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड नेटफ्लिक्स, और ये सब। फूड की सर्विसेज ड्रोन से डिलीवर हो रही हैं वर्ल्ड ओवर। फिर हेल्थ केयर के चैलेंजेस आ गए, योर मेंटल वेलनेस, योर फिजिकल वेलनेस, योर स्पिरिचुअलनेस, योर वेलनेस, योर एनवायरमेंटल वेलनेस एंड योर इकोनॉमिक वेलनेस। All of a sudden the entire industry got into a new phase, new mood, new way of working. अभी यहाँ पर लिख रही हैं ममता जी, दोबारा लिख रही हैं, having self confidence is vital. If you don't have faith in yourself, there is no way you will be able to convince investor, partner, customer, employee or anyone else to either. Yes, that's so true. We all have to understand ट्रिमेंडस स्कोप ऑफ सर्विसेज। अब हम सबको कोरोना में पता लगा कि सर्विसेज का कितना बड़ा स्कोप है। सर्विस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिविजुअली अगर आप देखो तो दे वेरी इन साइज। ऑन वन हैंड देयर आर ह्यूज एंटिटीज, बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री हैं, एयरलाइन हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईटी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये बड़े बड़े हैं। पर इन्हीं के साथ साथ कुछ छोटे भी हैं जो बहुत कुछ देते हैं, जैसे आउटडोर केटरिंग है, आपके जोमेटो वाले और स्विगी वाले, ये सब। उसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर्स, वेलनेस के इंस्ट्रक्टर्स, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये जो सर्विसेज सेक्टर है इसको हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में इट स्टिल लैक्स एंड एक्यूमुलेट्स। इसमें बहुत त्रुटियां, कमियां और खामियां हैं जिनको इम्प्रूव करना जरूरी है, because services sector still lacks and accumulates problems in terms of sustainability of work, lack of capital, effective promotion and accessibility of regulations. It's very important which we have to work out. के राय भी कोई आज जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ममता जी और उसके बाद विराज देवांगन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी इसमें आगे आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए प्रॉब्लम्स। Excuse me. Problems faced by service entities today. क्या क्या problems है? Lack of timely handholding, lack of capital, lack of credit facilities, lack of marketing support, lack of during and post-COVID research and development, lack of infrastructure facilities, lack of updated adoption of the technology at every stage, policy and compliance issue, governance issue, and lack of skilled manpower. All that is needed if we want services exports from this country and services sector doing very well. The government approach to the public service needs fresh approach. Change in customer services trends, service delivery trends are changing, digital transformation of services required, and innovative education and skills, hence knowledge management services to be provided. Now, top startup and sectors booming, growing during COVID-19. अरे ये तो कमाल हो गया, edtech startups,
बाईजूस कहां से कहां पहुंच गया, बाईजूस की लॉटरी लग गई। बाईजूस ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ जाएंगे। हाबुंग मैम लिख रही हैं, नीड मोर सच सेशन इन फ्यूचर टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो। बालकृष्ण जी लिख रहे हैं, योगा इज ब्रिंगिंग फिटनेस इन बॉडी, calmness in mind, kindness in heart, and awareness in life. Wow. ममता जी लिख रही हैं, when you help others feel important, you help yourself feel important too. एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने बड़ा अच्छा किया है, एडटेक प्लेटफॉर्म ने संभाल लिया। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। उसी तरीके से जो कुछ भी आप टीवी पे देख रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ई कॉमर्स, आपके घर में फूड डिलीवर हो रहा है बगैर किसी ह्यूमन बीइंग के टच किए। और ये जो ओटीटी की वीडियो स्ट्रीमिंग है जो मैंने आपसे कहा, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग, this has also become very important. New education policy, आप ये देखिए, during the pandemic, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी भारत को दे दी। 34 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई। और उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली फैंटास्टिक जॉब, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। We are grateful to Mr. Mohit Soni, the CEO, Media Entertainment Sector Skill Council. We have done 100 programs during this pandemic with him. We are grateful to Madam Monica Behel ma'am. She's the CEO of our Beauty and Wellness Sector Skill Council. इनके साथ भी हमने बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स किए हैं। Something wonderful. Colonel Anil Kumar Pokhriyal, if you're thinking about startup, if you're thinking to become entrepreneur, if you're thinking to start your own venture, then he is the right person to get the complete support, guidance and all. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana mein, you have got all the programs complementary. So what I would like to make a request to each one of you, that please take out your time, go through the web portals, pick up the course of your own interest, pick up the course of your own choice, और उस तरीके से लेके चलो। Mamta, when you help others feel important, okay, when you help yourself feel important too. Kavita, each one of us need a hand holding in life for growth, and government is giving a hand holding to upcoming entrepreneurs. Make the best use, and that is something very important which we all have to think of. MSME से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का। यहाँ पर मैं सेक्टर स्किल काउंसिल की बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि ये 30 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास, they are giving lots of free courses in India. Join those courses, be on board, become a part of that. You'll pick up something new, you will learn something new which will help you. We are proud of the chairman of the National Council for Vocational Education and Training, Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi ji, 1984 batch IS officer. There was a confluence of two bodies, National Council for the National Skill Development Agency and NCVT, and there's a National Council for Vocational Education and Training. They're doing great job, fantastic job. Now coming on to our chamber very strongly feels that education and skills, they are not complete unless the child gets employment, unless the child is really placed somewhere. That is something very important and for which institution has to keep a track. सबसे पहले हमको पैन इंडिया अवेयरनेस करनी है सर्विसेज सेक्टर की। लोगों को पता ही नहीं है सर्विसेज सेक्टर क्या है। लोग सोचते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो ज्वाइन करते हैं वही सिर्फ सर्विसेज सेक्टर है। So the first and the foremost need is awareness campaign throughout India for the services sector. This is something very, very important, and our chamber hereby gives in totality our services because we hold expertise, whether it's a technical expertise, digital expertise, pan-India expertise. We have got the confluence and we know how to enhance the employability and entrepreneurship across India, how to get more entrepreneur, how to promote services, and how services export should take place from India. Now, immediate academic intervention is required. We have to enhance employability.
We have to teach certain languages, foreign languages, which can be useful for our exports. Like for an example, India has signed a bond and a MOU with Japan. 3 lakh youth have to go over there. So learning a Japanese language, that is very important. You have to pick up the language. And incubation center, composite campus. So ladies and gentlemen, first and foremost requirement is train the trainer for most effective outcomes. This is something very important which we all have to understand. You require trainers, you require mentors, you require master trainers. They are the one, those are going to put life into the youth. Youth को जब energy मिलेगी, time and energy, time and energy, time and energy, they are very important for all of us. बालकृष्ण जी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was launched in 2015. इसका part 1 हो चुका है, part 2 हो चुका है, part 3 हो चुका है. Yes, thank you very much. न्योदू मैम जुड़ रही हैं निर्जुली से and नाहरलगन से from Arunachal Pradesh. And thank you very much, ma'am, for joining us. It's a great pleasure. And thank you very much for being a part of it. We are missing Julie, ma'am, today. Hope she joins in a little while. And thereafter, let's move ahead. What our chamber can do for you. There is a talent, unexplored talent, unpolished talent, not recognized talent. So, हमको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एंड दैट वुड बी वेयर International Chamber for Service Industry, ICSI, can do a very pivotal role because our education ecosystem, our industrial interface, and every individual, every child we have to take into consideration, because ultimately आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे क्या चाहते हैं. What does youth want? So ladies and gentlemen, there is something known as capacity building. जब मैं आपको कोई टेक्निकल नो हाउ देता हूं और मैं आपको वो सारी स्किल्स देता हूं जो आपको एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं, स्टार्टअप बना सकती हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. सो टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, जो पहले से सर्विस इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर हैं, उनको पोर्टल पे भी लेके आना है. और जो नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, जो पुराने वाले हैं उनको अपग्रेड करना है, जो नए वाले हैं उनको लेके आना. और उसके लिए हम इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवरीथिंग इज रेडी, वी कैन गिव. और सर्विसेज एक्सपोर्ट में ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because brains behind the new world is going to be human resource. How the world will shape up, how the world will catch up, what will be the new world, how it would look like, everything would depend upon the brains behind the new world and human resource. Because we are devoting and dedicating quality time, we understand there's so much to learn, there's so much to pick up, there's so much of information available. One life is not enough to get the hang of even one subject, what to talk of all these subjects. So we have to understand, we have to move together. Now, what is India's advantage? The global population is aging. Europe, Canada, East Asia, they all are aging. And as far as India is concerned, we have got the youngest population and maximum young population. So services exports में talent identification, talent development, and talent management. Our chamber can take on all the activities with you. It would be a pleasure to work closely with you. There are some government initiatives which Ministry of MSME has taken, like sense of security for employees, access to markets, and technology upgradation, and ease of doing business, and access to your credits. All these are very important government initiatives. Now, services export marketing promotion scheme may, when you think about the global workshops, summits, and the kind of exhibitions and the kind of international seminars, expos, all that is possible because we have to go well prepared, and everybody should have an opportunity
those are keen to be a part of Ministry of MSME or MSME sector as a whole, you must develop the package and take advantage of what Government of India is offering. Then services industry market promotion schemes. This also, if you'll go through, you will get to know, like sending a delegation of the Ministry of MSME to international exhibition fairs, conferences, etc. in the foreign countries. And under this IC scheme, that's called International Cooperation. International Cooperation Scheme provides financial assistance on reimbursement basis for airfares, space, rent, freight charges, advertising, and publicity charges, and publicity charges, and entry and registration fee on the reimbursement. Now, all this money, all this package is being given by Government of India. आप अगर बाहर जाके किसी ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में, कॉन्फ्रेंस में किसी जगह पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो you get the support from Ministry of MSME, and also you can take it from Services Export Promotion Council. MSME में ही NSIC भी आता है. The new, the Udyam registration portal है, उसमें imagine 30 lakh people already, the other day we have read, is registered. Benefit क्या है? We all have listed out over here what benefits you can get. Then MSME का जो उद्यम registration है, चाहे आप माइक्रो है, चाहे स्मॉल है, चाहे मीडियम है, आप you are going to be the world global champion. Why not to take advantage? हमारी recommendation है, given the growing importance of the data economy, it is paramount that the government creates an independent body which can advise and provide consultancy to micro, small, and medium enterprise and enable them to win in this new digital world. Then only we can have a multiplier benefits. Now, technology is going to play a very important role. We all have to understand what is the importance of technology as far as the MSME is concerned. If I say it is now a high time for the MSMEs to remodel and redesign their business based on technological aspects. And at the same time, the pandemic has compelled the business world towards digitalization. हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते. कुछ लोगों की तो रिसर्च कह रही है कि भारत की एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन जितनी आगे इस कोरोना काल में बढ़ी है, ये नॉर्मल पेस में इसकी अगर हम लेकर चलें तो इतनी तेजी से नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट पहले नहीं कर सकते थे. कोरोना की वजह से एवरीथिंग हैज बीन पुट ऑन ए फास्ट ट्रैक. नाउ व्हाट इज द फ्यूचर सिनेरियो फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स? अगर आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं, the key word is innovation. Have a faith in yourself, get a hang of the entire market, and some facts about the Indian startups. Indians जो है उसमें कितने लोगों को गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टार्टअप, जॉब्स कितने क्रिएट किए गए, स्टार्टअप्स कितने हुए, यूनिकॉर्न्स और ये स्टार्टअप्स कैसे है, ये सब चीजों को समझना जरूरी है. उसी तरीके से इंडियन जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, दे हैव टर्न्ड यूनिकॉर्न्स. दैट मींस जो आपकी टर्नओवर होती है, यूनिकॉर्न है कि भाई आप सारी सरहदें क्रॉस कर गए हैं. पूजा माखिन मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑल द वे अंबाला. God bless you in India. Sakshi ji, thank you. Now let's move ahead. Indian startups turning unicorns 2x factor than a decade ago. अब आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ लखपति और करोड़पति कितनी जल्दी हो रहे हैं, और देखिए कितने सारे स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं. सबको ये बात समझनी है. और जो हमारी एडटेक प्लेटफॉर्म है, इनकी ग्रोथ तो इतनी जबरदस्त है कि आप सोच ही नहीं सकते जो कुछ ये कर रहे हैं. उसके बाद how to start your own business. If you are interested, if you have an idea, do a thorough research, incorporate basically that into the business entity to start the business officially. उसके बाद registration कीजिए और उसके बाद startup कीजिए. Now before you start to work on your startup, feasibility is very important, business plan is very important, business structure is very important, refund is very important, and thereafter registration, Startup India program, and good digital presence and good workshop, workspace, and then good team. All that is required.
स्टार्टअप की जो रजिस्ट्रेशन है उसके कुछ एक स्टेप्स हैं, हाउ यू शुड इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, हाउ यू शुड रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, and thereafter you have to get the DPIIT recognition. Then there is a recognition application. Then there is a document for registration, which is to be done within the state government itself. And then there is a recognition number. And finally, with that recognition number, you approach the district employment officer and you can be pushed towards some kind of work where the government would be more than happy to support you. How to register a business firm or a company? All the steps are given how to register a company. Now, this is again very interesting that what are the empowering business protecting investors. Ease of doing business भारत में कैसे है? Ministry of Corporate Affairs कैसे ensure करता है कि आप किसी को unnecessary तंग ना करें, किसी को unnecessary कोई परेशानी ना करें? तो उसके लिए एक सेपरेट जो मिनिस्ट्री की हम बातचीत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में एक आदमी को इंचार्ज बना के, अगर आपको उसमें सारी मदद चाहिए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, ये सारी की सारी चीजें आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट को देखकर वहां से लेकर आइए, पढ़िए और उसके बाद आप आगे स्टार्टअप का जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको लेकर चलिए, सारा प्लान कीजिए और आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप 1 है, व्हेन यू कम टुवर्ड्स दिस, हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद 1 पर्सन कंपनी आप कैसे बना सकते हैं जो गवर्नमेंट ने आप परमिट किया है, तो that also you have to understand. And here is the comparative list of different types of business structures in India. You can go through in your own time. It's available on YouTube. What kind of business structure should I choose for my startup? जो भी स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं उसके प्रति पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उसमें चाहिए। फिर उसके बाद रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, फिर आपको स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया जो है वो प्रो बोनो services hai. It all depends on how the other party is reacting, how the other party is behaving, how loyal the other party is. कई बार आप भाईचारे में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, सब कुछ देख के चलते हैं, आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं और जब आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई आपको वकील साहब की मदद चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वो प्रो बोनो सर्विसेज में आपकी मदद करवाती है। स्टेप 3, आपको DPIIT की रिकॉग्निशन और एक सर्टिफिकेशन मिलता है और उसके बाद आप स्टार्टअप की रिकॉग्निशन और टैक्स एग्जेम्पशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन के स्टेप है, कैसी नजर आती है, क्या है, ये है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जब आपने भरना होगा तो आप वहां पर सारी चीज को देख सकते हैं। फिर आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है। कहाँ से है, कहाँ से है, DIPPT, आप भूलिएगा नहीं। उसके बाद अदर एरियाज क्या है, पेरेंट्स, टीचर मेकर्स एंड इन डिजाइन रजिस्ट्रेशन। जब हम इसकी बातचीत करते हैं, जब आपने वो सारे बेसिक स्टेप्स कर लीजिए तो उसके बाद पेटेंट पे आइए, अपने ट्रेडमार्क पे आइए और अपने डिजाइन की रजिस्ट्रेशन पर आइए। फिर आगे आपकी फंडिंग, कहाँ से फंडिंग आपको मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज कैसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलता है, फिर डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन वेव्ड ऑफ, जिसको गवर्नमेंट ने कहा भाई इनकी जरूरत नहीं है। अब बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर स्टार्टअप इंडिया, क्या बेनिफिट है कि लोगों को आप लेकर चलें और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, लीगलाइज्ड वे में MSME में आना चाह रहे हैं, वो पुलिस आपको अप्रोच कीजिए, हमें अप्रोच कीजिए, वी विल वर्क आउट, वी विल प्लान इट आउट एंड वी विल सपोर्ट यू whatever best we can do from our side. Now, present status of the incubators in India. How many incubators are there? What is their status? What exactly are they doing? How are they working? That is something very important which we have to take on. उसके बाद आइए, how long is a company recognized as a startup? इसको भी हम लेकर चलते हैं। अगर आप स्टार्टअप में हैं तो आपकी कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और आपका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए ग्लोबल इनिशिएटिव टुवर्ड्स पोस्ट कोविड, जो
पोस्ट कोविड है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, सो डिजिटलाइजेशन के लिए, टेलीवर्किंग के लिए, ई सेल्स के लिए, क्या क्या आपको अपस्किलिंग में, रीस्किलिंग में, और आप किस तरीके से आगे जा सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू थिंक ऑफ. सपोर्ट फॉर फाइंडिंग न्यू ऑल्टरनेटिव मार्केट्स एंड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि जो भी आप काम शुरू करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये ना हो कि आपका काम डूब जाए. इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ अगले रविवार रविंद्र नाथ जी मिलेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे. आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक से रहिए और अपने प्रयास को आगे लेकर चलिए. और देखिए, कोरोना और नो कोरोना, थर्ड वेव और नो थर्ड वेव, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे, आपको अपनी मेहनत करनी होगी, आपको अपने आप को दोबारा पुनः एस्टैब्लिश करना होगा और आपको अपने आप को आगे लेकर चलना पड़ेगा. So ladies and gentlemen, whatever human mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together. Let's make our education relevant. Let's make our skills relevant. Let's make our MSME relevant. And all of us together, I'm pretty sure that globally, if we all are together, we can make a difference. और भारत आत्मनिर्भर हो सकता है. 5 ट्रिलियन तो क्या, हम 10 ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं. बट दिस ऑल वुड डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, what kind of competencies, what kind of collaboration, what kind of creativity, what kind of innovation, and how do you make best use of your time and your energy. इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार. हम लोग फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. वी विल ज्वाइन अगेन. एंड रात को 8 बजे आपका वेबिनार है. आज आप एनआरआई से मिलेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन से, और आज न्यूट्रिशन पर है, भूलिएगा नहीं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू. Tonight we will be taking you to United States at 8 p.m. and we will discuss what kind of a nutrition the body requires, how to keep yourself up so that you are energetic, you are vibrant, and you are relevant with your education, skill, and micro, small, and medium enterprise. इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, रात्रि के 8 बजे.